Go on, Faisal. 4th of September, in a speech, I uncovered this plot, and the plot was very simple. That they had started a campaign to say that I had committed blasphemy, and that I had hurt religious sentiments, and that this was a governor of Pakistan called Salman Taseer was murdered in 2010 or 11 because he was supposed to have upset the religious sentiments on blasphemy, and he was murdered by his bodyguard. So the same, I disclosed that what they were planning to do was to, first they whipped up a campaign that I had committed blasphemy, or I was anti-religion or something. And then they gave statements on it. Maryam Nawaz, Nawaz's daughter, and two of the MNAs, they gave statements that I had heard the sentiments of the people. And the whole thing was that they wanted me, the ploy was to have me bumped off in the name of a religious fanatic, that he's, just like Salman Taseer was killed. So this was the ploy, and I disclosed this on 24th of September. And when we were leaving, a night before we were leaving for Wazirabad, I had information that these 3 people had planned. I named the 3 people. And they had planned either it was going to be that day or the next day. It was either going to be in Wazirabad or the next day we were in Gujarat, that they were going to make an attempt on me. And he asked me not to take the trip because they would try and assassinate me. So this all played to that script. The whole thing was that they got hold of this guy who was a decoy. What happened was that there were 2 gunmen. One was this decoy who fired from the side, and it hit my legs. So as I was falling, the rail guy was in the front in some building, and so as I was falling, these bullets went over my head. So he was supposed to hit from the front. We feel this was going to be the religious type guy who made some statements, that I was against, I had insulted, I committed blasphemy. And so he was the decoy, the real killer was at the front. And because they didn't synchronize it or something, because as I was, when it hit my legs, I fell, and the bullets, the second burst came from front. So we all know there were these 2 gunmen. So these 3 guys, we want their resignation because there can be no investigation if the Prime Minister, the Interior Minister, and this ISI guy, Major General Faisal, if these 3 are involved, there can be no independent investigation. Well, what evidence do you have that the government and the head of the director of the ISI is involved? The evidence, in 6 months, you see what has happened in 6 months is that ever since they imposed this government of crooks on us, that they have tried everything to eliminate PTI. But what has happened is unprecedented in Pakistan. The party has just grown from strength to strength. It's become the biggest party in Pakistan. In the by-elections, there have been 37 by-elections. PTI has won 29, 75%. And we've had big rallies. So I think they tried to disqualify me. That failed. They've tried to put terrorism cases on me. Then there's some other case by the Election Commission. And I think they're petrified of the long march because they saw the crowds joining us. And they're scared that by the time we reach Islamabad, there will be, which I know there would have been, and whenever we restart the march, there'll be a sea of people in Islamabad. So that's when they planned this. And I have inside information. All I want is a proper investigation into this. Now, the proper investigation cannot take place with these 3 on top.
खान साहब आपकी जो Wouldn't it तहरीक make है more वो sense? साइफर से please शुरू let us know. आपकी जो तहरीक है वो साइफर से Yeah. एक सेकंड जी, आपकी जो तहरीक है वो साइफर से शुरू होती है, लेकिन जो पाकिस्तानी फौज है वो ये कह रही है किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि वो इस किस्म की किसी भी साजिश में मुलविस नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि कोई साजिश हुई है। देखिए मुझे ये बताएं, क्या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहेगी कि हमने साजिश करके पाकिस्तान गवर्नमेंट कराई? और क्या ये साजिश नहीं है कि जब आप देख रहे हैं कि एक मरासला जो साइफर सीक्रेट कॉन्वर्सेशन लू और पाकिस्तानी एम्बेसडर में, वो तो ब्लैक एंड वाइट में सबके पास अवेलेबल था, वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास था, वो तो कैबिनेट के अंदर गया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया, चीफ जस्टिस, तो वो लेटर तो एग्जिस्ट करता है जो साइफर है। तो साइफर में तो वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान को हटाओगे तो नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज है, और अगर इसको हटा दोगे तो ठीक है, उसके बाद और अदम एतमाद में हटाओ, और उसके बाद अदम एतमाद आ जाती है अगले दिन। तो हम तो ये कह रहे थे तफ्तीश करो, पता तो चलाओ कि ये हुआ क्या है कि एकदम वो कहता है और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। और रजीम चेंज कोई पहली दफ़ा तो नहीं अमेरिका ने की, मोहम्मद मुसद्दक की जो ईरान के अंदर गवर्नमेंट गिराई गई है, वो तो CIA के पेपर्स अब डिक्लासिफाई हुए हैं, वो तो सबके सामने है, एग्जैक्टली यही किया था वो। जो DGIA से आप कह रहे हैं, कोई भी जो मातहत शख्स है वो अपने सरबराह के कहने के बगैर कुछ नहीं करता, तो आपको लगता है कि DGIA इसमें आप उसके पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या अब उनके जो चीफ है DGC की बात कर रहे हैं, ये फैसल की बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि यहाँ एक गलत फहमी पड़ी हुई है कि अगर आप किसी भी फौजी की तनकीद कर देते हैं तो इसका मतलब क्या फौज के अगेंस्ट हो गए। ये बड़ी कोई एक अजीब सा सिचुएशन है। ये ऐसे है कि किसी पॉलिटिशियन को कुछ कहो, हम सारे पॉलिटिशियंस को बुरा भला। अच्छे बुरे हर इदारे में होते हैं, अच्छे बुरे जज होते हैं, अच्छे बुरे सियासतदान होते हैं। फौज के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ है, जो गद्दारी कर रहे थे, मेजर जनरल जो था अमेरिका के लिए गद्दारी कर रहा था। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर आप इस तरह की काली भेड़ जिसने जुल्म किया है, अगर आप इनको हटाएंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा। हमने हमारे 20 लोगों ने पैसे लेके सेनेट इलेक्शंस में अपने आप को बेचा, हमने 20 को निकाला, पार्टी की क्रेडिबिलिटी ऊपर चली गई। Will you talk to officially to the US government about the cipher? There's no point in talking to the US government. US government का तो कंसर्न नहीं है ना। जी इंसिडेंट हुआ, FIR is not being registered. क्या प्रॉब्लम थी? आपकी अपनी गवर्नमेंट है, उसके अलावा ये बताइएगा, आपने कहा कि इनकी रेजिग्नेशन चाहिए कि इनके हिसाब से डिमांड्स नहीं पूरी होती, तो देन आप क्या करेंगे? दूसरी आखिरी चीज़ और कि इफ़ दे पुट मार्शल लॉ, अगर सिचुएशन वर्स होती है तो व्हाट विल बी योर कमेंट? देखिए सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ना, वो पुरअमन एहतजाज करती है, और वो हम करेंगे, हम कर रहे हैं कि ये तीनों ने असैसिनेट करने की कोशिश की है। मेरे पास अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे और इनका माजी है, राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए ताहिरुल कादरी की 12 लोगों को कत्ल किया और 80 लोगों को गोलियां लगी मॉडल टाउन में, और उसी में शहबाज शरीफ तब चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इनको मारा था। ये राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल किए हुए उसने शेर अली के आबिद के बाप ने, और वो शहबाज शरीफ ने 5 जो गवाह थे इसकी FI केस में, वो मर गए 2 महीने में हार्ट अटैक से, और इन्वेस्टिगेटर मर गए। और शहबाज शरीफ के ऊपर केस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, जो इसने पुलिस मुकाबले में लोगों को मारे, आबिद बॉक्सर ने TV पे बयान दिया हुआ, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच पे 900 इसके केसेस हैं जो जिसमें इसके ऊपर आया था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का। सो देयरफॉर इनका रिकॉर्ड है ऑफ रिमूविंग पीपल फ्रॉम द वे। और ये जो फैसल का फैसल इट्स अ रेयर ऑफ टेरर। आजम स्वाति को जो इसने किया, आजम स्वाति फैसल को ब्लेम करता, जनरल फैसल को, और उसके अलावा ये शहबाज गिल से हुआ, वो ब्लेम करता है इसको, वो जो जमीर फारूकी वो है, वो तो ये ब्लेम करते हैं इनको कि जब से ये आए ये एक लोगों को नंगा करना, मारना, सब कुछ है। So, अरशद शरीफ और मार्शल लॉ, प्लीज इनको भी रिस्पॉन्ड। martial law, the days of martial law are over. पाकिस्तान जो thought process है, it's gone way ahead of that.
मार्शल लॉ नहीं लग सकता। But you're the- हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया तो पुलिस वालों से पूछो, उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर है। FIA को पूछो कि ये जी सारे केसेस क्यों कर रहे हो, जी पीछे से ऑर्डर है। इलेक्शन कमिश्नर उससे पूछते हैं ये जो सारा कुछ कर रहा है, वो मैसेज भिजवाते हैं कि जी मुझे पीछे से ऑर्डर है। तो हमारा केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे थे 25 मई के, वो कह जी वो उधर से हमारे अपने लोग पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें वहाँ से ऑर्डर आ रहा है कि ना करो। सो प्रॉब्लम ये है, देखिए कोई भी जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना दुनिया का, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दुनिया में कोई मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करता। ये बैलेंस लाना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में। Khan sir, you are demanding independent inquiry. You have just said this. To whom you are asking for an independent inquiry and who will conduct such inquiry? From the Chief Justice of Pakistan, I have asked him to hold an independent inquiry, and his responsibility to establish rule of law. How am I supposed to get justice? I know these people did it because I have information from within. My source was from within the institution which told me. I knew that in the next couple of days they were going to do it, and the 3 people involved. Now, if they are involved, I should have access to an independent inquiry. With these 3 people in charge, there's no question of inquiry. And again, I repeat, they have a track record. The 2, Rana Sanaullah and Shehbaz Sharif, have a track record of eliminating people. One more. Khan, they want you eliminated from the political landscape of the country, and they have gone to, they've done everything now. What do you expect next? What is going to be there next? There is no change without a leader. Huh? Leader has to be there to bring. No, but you know, people follow the leaders. but look, you know, miracle I'm here. So it shows, you know, when your time comes, people go in so many different ways. I built this cancer hospital. 5 years my office was here. 3 of my close friends arrived here and 6 months later they were gone. So, you know, this idea that, you know, you have control over life and death. I mean, I shouldn't be alive really, the trap that I walked into. But, having said that, yes, we will have more security. Next time you're on the streets, We'll you'll have more security. खान साहब, आपने अपनी स्पीच में कहा कि आप नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। क्या इसे इस तरह ट्रांसलेट किया जाए कि अगर उन्हें दोबारा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होती है तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं ये चीज़? देखिए, NRO तो सबको दे रहे हैं। NRO तो अब मिल जाना सबको। मरियम भी पाक होगी, इसाक डार, सेल्फ कन्फेस्ड मनी लॉन्डर, वो भी पाक हो गया। सारे इनके पास है। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो रहे हैं तो उसके भी हो जाएंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ उसे किसी पंजाब के हल्के में मेरे से लड़े। जी सुमेरा। If we accept that it is, in fact, as you say, a government plot to assassinate you, why wouldn't they have hired more skilled individuals? Because essentially what the government has done is made you a martyr and has allowed you to use this for political gain. Well, you should ask them. I mean, they know the answer to this, why they missed. But the fact is, look, the fact is that it was actually a very well planned thing, because the real shooter was in the front. And you know, he was the main professional. This guy was a decoy, because he made all the right statements which fitted the script, that it was trying to make it out as if it was a blasphemy case. And that's why he did it. But you know, a bit of research on his background, you know, he's not even a religious person. So he was a decoy, he was a drug addict, but the main shooter was in the front. And because this guy, the burst that hit me, I was falling down. The guy, when he fired from the front, went over me. Yeah. The government has Samira? already said that it is Samira, not please going let to me- Ji, hold we need to have fresh others. elections. What now is the goal of this law? Last march? question. Yeah. Look, it is, you know, a political party does not accept if a government says it's not going to hold election and we say, okay, thank you very much, we'll go home. Political parties mobilize public, and that's why you're democratic. And so the democratic thing to do is to mobilize the public and protest
When 2 million people turned out to protest against the Iraq war in Britain, they didn't expect that, they will stop the war, but they're still protesting. Because we have a government of crooks, 61% of the cabinet is on bail. They are having $5 billion worth of corruption cases waived off, while the country is sinking into, the economy is sinking. All economic indicators are down. The business confidence, according to the latest survey, is at its lowest now. So, a country which is going down, inflation is at 50-year high in Pakistan, and we have these government who is only concerned in getting rid of the corruption cases. So therefore, as a political party, you just cannot allow this to happen in your country. That the crooks come into power and then have NRO2. First they had the corruption cases waived off by Musharraf. Now again, the NRO2 in this regime. So therefore, we are protesting. फौज से कौन लड़ना चाहता है? क्यों फौज से हम लड़ेंगे? लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम तनकीद कर सकते हैं कि ये जो ब्रिगेडियर फैसल, ये जनरल फैसल ने जो किया, ये बिल्कुल अपनी फ़ौज को भी, अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाता। ये कम से कम इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी पूरी हिस्ट्री और ये मुझे पता है इस प्लॉट का, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और इसके अलावा जो आज़म स्वाति से कस्टोडियल टॉर्चर हुई, देखिए कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर बैंड है। इन्होंने उससे भी की, जमील फारूकी से भी की, और उसको वो जो गिल है, उन सब से इन्होंने वो चीज़ें की हैं, नंगा करके लोगों को मारना। तो और ये जब से ये आया ये हो रहा है, तो इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिकॉज ये इनजस्टिस है और ये एक जिंदा सोसाइटीज़ करती है, वो इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करती।